नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्शन डी को। सैम्पल पेपर 5 के सेक्शन डी को डिस्कस करते हैं अभी हम। केस बेस्ड क्वेश्चन, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Chinese manufacturer learn of an opportunity to export toys to India, whereas where toys are sold at high prices. They start exporting plastic toys to India. Buyers in India now have the option of choosing between Indian and Chinese toys. Because of the cheaper prices and new design, Chinese toys have become more popular in the Indian markets. Within a year, 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys. Toys are now cheaper in the Indian market than earlier. What is the happening here? As a result of trade, Chinese toys come into the Indian markets. In the competition between Indian and Chinese toys prove better. Indian buyers have a greater choice of toys and at lower prices. For the Chinese toy makers, this provides an opportunity to expand business. The opposite is true for Indian toy makers. They face losses as their toys are selling much less. इसमें क्वेश्चन फर्स्ट आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर कॉलिंग एक्सपोर्टिंग टॉयज टू इंडिया बाय द चाइनीज एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट दे रखा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर कॉलिंग एक्सपोर्टिंग टॉयज टू इंडिया बाय द चाइनीज एन अपॉर्चुनिटी वाज द प्राइसेस ऑफ इंडियन टॉयज वाज हायर एज कम्पेयर टू द चाइनीज वंस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट स्टैंड्स ट्रू इन रेफरेंस टू द कंज्यूमर बिहेवियर एज शोन बाय द इंडियन बायर्स इन द टॉय मार्केट। इसका आंसर आपको दे रखा है, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू इन रेफरेंस टू द कंज्यूमर बिहेवियर शोन बाय इंडियन बायर्स in the toy market is that consumers try to optimize in both quality and price item. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रखा है, why Chinese toys have taken over the Indian toy market। इसका आंसर आपको दे रखा है, Chinese toy have made a global presence including the Indian markets. The reason behind the huge popularity of Chinese toys in the Indian markets is due to the affordable prices and wide variety of products available in the market. They have clearly targeted the lower income group and middle income group. नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आपको दूसरा पैसेज दिया गया, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द रीसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स। The constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in deflection in order to become ministers for cash rewards. Now the law says that if any MLAs or MP changes parties, he or she will lose the seats in the legislature. This new law has helped bring defection down. At the same time, this has made any dissent even more difficult. MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decide. The Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. Now it is mandatory for every candidate who contests election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about one third, to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies of the party. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द डिफेक्शन। व्हाट इज डिफेक्शन, डिफेक्शन क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे रखा है, डिफेक्शन इज चेंजिंग पार्टी एलियंसेस। A person continued support for a political party from the party on which a person got elected to a legislative body to a different party. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन्फर द इम्पोर्टेंस ऑफ एफिडेविट गिवन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग कंटेस्टिंग इलेक्शन। इसका आंसर आपको दे रखा है, ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर कैंडिडेट्स हैज टू गिव द डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस रिपोर्ट थ्रू एन एफिडेविट। इट हेल्प्स द पब्लिक टू डिसाइड द सुटेबल कैंडिडेट टू इलेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ डज द पोजीशन ऑफ वुमेन चेंज ड्यू टू रिफॉर्म्स मेक फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। इसका आंसर आपको दे रखा है, मैनी सजेशंस आर मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। Among these, one of the most important reform is to give at least one third numbers of tickets to women candidates. This helps women to participate in direct politics and they can raise their voice for their own demands.